ओके गुड मॉर्निंग कल लास्ट क्लास रे गोटे क्वेश्चन देथिले इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k into r to the 7 r cap ताले ता एटा गोटे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थिला ताले से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो एक्सप्रेशन बा फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू r केते हो बोली क्वेश्चन पचरा हितला हैला देखियो तो दिस वाज द एटा तमरो थिला इलेक्ट्रिक फील्ड तो आमे जानछे जेतर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रे E डॉट एरिया बा E टू एरिया भी सीधा लिखि दउछि 4 पाई r स्क्वायर से एरिया टी थिला इज इक्वल टू q enclosed by epsilon naught तो q enclosed रे रो dv by epsilon naught नहीं तो dv रो dv इंटीग्रेशन dv टी केमते लिखुतली 4 पाई r स्क्वायर dr और रोटा तो मुझे जानी नहीं कांस्टेंट ना वेरिएबल तक तो बाहर को नहीं परिबे इंटीग्रेशन रो आई डोंट नो वेदर इट इज कांस्टेंट और वेरिएबल देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड रे पुट करूछ दैट इज k r टू द पावर 7 4 पाई k r टू द पावर 7 e r टू द 7 e r स्क्वायर तो टोटल केते हला r टू 9 हला एपटे 4 पाई रो भीतर अछि एप्सिलॉन नॉट एठी अछि r स्क्वायर dr रो इंटीग्रेशन तो एपटे r टू द 9 अछि माने देखो r स्क्वायर अछि तो एपटा पक्का एई भितरे 9 अछि माने टोटल टा r टू द 8 dr होबा एई फंक्शन रे होबाटा होबो कि नहीं नलाटर 9 आसियो कोठु जदि मैथमेटिक्स हम देखिबी एई फंक्शन टी निहाती भाबरे 8 रे 8 तो रहबाटा रहइबो ता से तो कोन गोटे कांस्टेंट रहिलो रहइबो सो लेट सेटा को लिखुची लेट रो इज सम कांस्टेंट r स्क्वायर अछि तो बाकीटा पका 2 6 रह तम पई को जाय क्वेश्चन आसी परिबो तम पई ए जाय क्वेश्चन आसी परिबो रो r ऊपर केमते डिपेंड करजी एटा r 6 केमते होला जानि परलो r स्क्वायर ऑलरेडी अछि r 8 दरकार बुझला तो ताले एठी हम पके दोछि मते ए सी टा ही फाइंड आउट कर दे मोर काम सरला फंक्शन तो एटा हबो एटा ही खोजियार अछि मते हैला सो नाउ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट c r टू 6 तो c को बाहर को नहीं जाउछि r टू 6 तो r टू 2 dr तो 4 पाई एपटू 4 पाई कटिला k r टू 9 c by epsilon naught r टू 9 by 9 तो 9 गला तो एठू हम कहि परबी c इक्वल टू 9 k epsilon naught so your rho equal to 9 k epsilon naught r to the power 6 got my point किंतु करा हला मैथमेटिक्स टा बुझ परलो
बुझला सो एटा गोटे भल क्वेश्चन बाकी देखिए तुम जो जनरल तुम थाए बही मान जो भाया से क्वेश्चन टिके डिस्कस करिए नेक्स्ट तो काली हम सॉलिड एंगल देखुले तो काली हम सॉलिड एंगल देखिले सो तुमको लास्ट कहती जस्ट कीप इन माइंड इटा थीटा एंगल बा अल्फा एंगल जहाँ भी नौछन ये जो सॉलिड एंगल टी करी जो 3 डायमेंशनल एंगल टी 2 पाई 1 माइनस cos थीटा कि नहीं अब फ्लक्स हिसाब रे एथरे केते फ्लक्स जाइथिबो ए एंगल रे दैट इज q बाय जो चार्ज q अछि ए जगह रे 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा या करथिल ना तो पूरा 4 पाई देखो एंगल तले पूरा एनक्लोज होची कौन से गोटे एनक्लोज सरफेस अछि तो एनक्लोज सरफेस पाई थीटा मोर केते 360 हेले 180 नेबी तो सही देखो पळे आछ फॉर एनी एनक्लोज सरफेस फॉर एनी एनक्लोज सरफेस तो थीटा तो पाई जो केते 360 रो आधा 180 डिग्री ओके तो फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज हे गला ना q by 2 epsilon naught 1 minus cos 80 180 cos 180 minus 1 2 2 2 कटले हे गला q by epsilon naught जोटा गॉस लॉ एटा ही तो गॉस लॉ हैला एबे देखिया डिफरेंट डिफरेंट सिमेट्री हिसाब रे देखिया क्वेश्चन क्वेश्चन एटा गोटे एमती भाविने सेप्टर अछि एट गोटे चार्ज अछि q एट होत को डिस्टेंस r ए हाइट h तो ये जो शेडेड सरफेस बने दउची से सरफेस रे खाली तो बाहर करे अछि सहज क्वेश्चन एई सरफेस रे केते फ्लक्स हबो बोली से पचारछि क्वेश्चन फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस फ्लक्स दिस सरफेस रे केते हबो सहज क्वेश्चन सीधा फार्मूला केते देखि कहलो
सिंपल सही cos थीटा। अरे से जो भी शेप हो, जहाँ भी शेप हो, तमे जो सरफेस रे पचारी से सरफेस कथा खाली भाव, एतिकरे जीवो ना, तो एटा तो पाई थीटा सरला फार्मूला हैला। तो q बाई 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा कहले केते कहबी h बाई h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर स्क्वायर रूट, बुझिला। आउ क्वेश्चन आज खाली एटा जहा एतिरो जहा क्वेश्चन है सार दबा ये सरी टॉपिक आज तो डाइपोल पढ़ाई न मत ना। डाइपोल हैला। काम करूँ 3 डायमेंशनल रे नहीं जाउछ तो ये प्रोजेक्ट रे उठे नहीं जावा। एटा उठे शेडिंग कर दोछ, एटा उठे क्यूब पूरा सिमेट्रिकली उठे शास्टी को रखी छी पूरा सेंटर रे। तो शेडेड थ्रू रे फ्लक्स थ्रू द शेडेड पोर्शन, फ्लक्स थ्रू द शेडेड पोर्शन। इजीटा मोहरे जीवा कथा आंसर देखो टोटल एनक्लोज माने थ्रू द क्यूब केते मते कह, पूरा एनक्लोज अछि क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट हबो पूरा क्यूब पाई क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट हबो क्यूब बाई 8 से कहले हो देखिया पूरा भीतर अछि हैला। तो सिमेट्रिकली सबु सरफेस रे देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुडा बाहरिबो सबु सरफेस देकी जीवो, तो थ्रू ईच सरफेस ध्यान दो थ्रू ईच सरफेस केते हबो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट सबु सरफेस रे एति बुझ पारलो 6टा सरफेस तो पर सरफेस क्यू बाई 6 तापरे मु जति शेडेड करछि पोर्शन टा गोटे सरफेस रेटा केते 1/4 इन द शेडेड पोर्शन रे पाई जदि पचारा जीवो दैट इज द 1/4 of q by 6 epsilon naught, तो q by 24 बुझी पारलो ना नहीं सही सरफेस देकी q by 6 जाउथु किंतु मु तार 1/4 हिस्सा रे पचारी छी क्यूब टा है क्यूब
हैला नेक्स्ट से क्यूब रो ही कर दउची कम यूजुअली एटा पडुची बेसी तो सरफेस रखी आसची हैला चार्ज इज ऑन दिस सरफेस ई सरफेस रे अछि म ताको ये कर दउची शेडिंग कर दउची ई सरफेस ऊपर अछि आसची हैला ये बे एनक्लोज अछि कि इज इट एनक्लोज नाउ नहीं जदि एनक्लोज नहीं डायरेक्ट तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखि परिबी नहीं एति तो कंफर्म तो सदा बेले सिमेट्री खोजियो जदि किछि देइनी एंगल एंगल डिस्टेंस डिस्टेंस एंज किछि देइनी हम सिमेट्री देखिबा तमरा सिमेट्रिकल ऊपर ही बेसी क्वेश्चन आसी तो याको मैं एनक्लोज करिया पई आ गोटे क्यूब नउछि हैला आ गोटे क्यूब नउछि तो कमति जदि रखि देबी एनक्लोज ही जिवो पूरा क्लोज हो गला ताले मो एबे कहि परबी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट तो पर क्यूब केते हबो तार उधा बुझला नहीं तो थ्रू द क्यूब क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कोन भाई दीटा क्यूब भलिया हेले क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट गोटे क्यूब रे केते हबो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्लियर बुझ परला नेक्स्ट देखो एठी जो चार्ज टी बाहरिबो एठू जो सॉरी एठू जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुडा बाहरिबो म काली कहितली जो शेडेड पोर्शन टी करिछि सेही शेडेड पोर्शन रे इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री करिवोनी से सरफेस ऊपर चार्ज टा रखा हिछि ताकू छाड़ देले बाकी जो पांचटी सरफेस रहिला क्यूब रो ब्लैक कलर जो क्यूब टा कराई कारण क्वेश्चन से ब्लैक कलर क्यूब ऊपर पचराई ना तो एठू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुडा बाहरिबो एक्सेप्ट दिस शेडेड सरफेस ये जो शेडिंग कराई से सरफेस छाड़ देले आ पांचटा सरफेस रे एंट्री करिवो तो थ्रू सरफेस शेडेड सरफेस जदि पचारला जीरो कारण सेतरे किछि होबनी खाली सरफेस पचारिछि याकू छाड़ देले बाकी पांचटा रे डिवाइड कर दो अब पांचटा सरफेस रहिला अब इन द क्यूब क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो आंसर कोन हो जिवो क्यू बाय 10 एप्सिलॉन नॉट तुम एभळा भाबी पारो किंबा एठी देखो केतेटी जो मु पूरा एनक्लोज कला पर केतेटी सरफेस अछि गण दियो एठी केते सरफेस होउछि गण दियो 1 2 एपटे थिबो 3 तळटा 4 5 6 सामनाटा एटा एटा सामना 7 8 बैक साइड रे थिबो 9 10 तार्थ एठु जो फील्ड बाहरुची 10 टी सरफेस देगी जाउची तो पर सरफेस केतला क्यू बाय 10 एप्सिलॉन एमती भाई परियो ना बुझेला नहीं बट सदाबेला ए भळा करिया ट्राई करो जल्दी करो केते ड्रॉ करो प्रैक्टिस कला पर मुंड भीतर से पसि बार जानिला दु जणा को
तापर जोटे चार्ज एज रखी एज रखी सरफेस आसली एज है एबे कौन हो देखिए तो दीटा रीजन मो शेडिंग करूची देख एई एज जो जो सरफेस सहित कनेक्टेड अछि एज टा कौन दीटा सरफेस सहित कनेक्टेड अछि गोटेटा आ गोटे ई सरफेस टा तो जहाँ भी फ्लक्स बाहर या थ्रू के जीरो एत तो किसी एंटर करनी कौन सरफेस ऊपर अच्छी ये जन सरफेस ऊपर अच्छी बुझिपारा नहीं ये दुटा सरफेस ऊपर अच्छे ये दुटार तो एंट्री हेनी तो जहाँ भी फ्लक्स बाहर आउ चार्टा सरफेस रे ही पड़े के बाहर पर क्यूब देखा तो तापाई कौन करवा या आग एनक्लोज करवा या आग एनक्लोज करवा तो ये क्यूब केतेटा हेले एनक्लोज हम ये क्यूब केतेटा हेले एनक्लोज हम हाँ आउ तीन टा एटा गोटे देली सॉरी एटा देली है आउ गोटे एबे एनक्लोज हैनी तळु देखा जाउची लगे देली एमती लगे ना कि लगे देली आ गोटे ताले एनक्लोज है बुझला नहीं एबे एनक्लोज हो गला पूरा तो ये चारिटा हेले जे एनक्लोज हो कि नहीं तो पर क्यूब क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट हम जो ब्लू कलर क्यूब से क्वेश्चन मत पचरा है ताले आइदर तू सरफेस गणी दे केतेटा अछि एते कहीं गणिबो आमे जानिछु दीटा सरफेस रे जीवनी शेडेड सरफेस रे तो जीवनी ताको छाड़ देले आ चारटा सरफेस रहला बाकी सरफेस रे 1 by epsilon naught सॉरी केतेटा 1 by 4 q by 4 epsilon naught q by 16 epsilon naught तो गणन 16 टा सरफेस अछि ना नहीं तो सामना को चारटा अच्छी पछाड़े चारटा 4 4 8 ऊपर दीटा 10 एपटे वर्टिकली दीटा 12 ग्राउंड रे दीटा 14 एपटे वर्टिकली दीटा 16 टोटल 16 टा सरफेस अच्छी देख बुझपारा
एबे कॉर्नर रे रखिबी आ मु डिटेल करबिनी सीधा क्वेश्चन करबा तमे भाभी कहि परिबो यार कॉर्नर रे उडे रखिया जस्ट क्यू एबे को थ्रू क्यूब केते हबो थ्रू क्यूब केते हबो आ शेडेड सरफेस तो 0 हबो छाड़ो शेडेड करनी सीधा पचार सरफेस केते हबो क्यू बाय 3 कहउछ क्यू बाय 3 केमती हबो समर्पिता तोर केते हबो रे क्यू बाय 4 से कहउछ देखबा ठीक अछि हम आगे एकन क्लोज करू से कहउछ चारटा दे देले इनक्लोज हे जिवो अकॉर्डिंग टू दैट आंसर कहउछ धर एटा गोटे क्यूब ହେଲା आउ दीटा ହେଲା आउ गोटे ହେଲା ଏବେ ବି ଚାର ଦେଖା ଯାଉଛି ऊपर पटे अछि ऊपर किसी अछि कि अभी तो चार्ज देखा जाଉଛି ना इनक्लूज ହେଇଛି एटा चार्जटा मु चारटा नहीं छी क्यूब आहुरी चारटा दरकार ना नहीं पूरा इनक्लोज करिया पई सिमेट्रिकली एनक्लोज करिया पई आहुरी चारटा दरकार ना नहीं ହେଲା आर पटे सब चारटा सेपटे भी सब चारटा रहबो तो टोटल केटा हबो 8टा 8टा हेले पूरा एनक्लोज हबो पूरा 8टी सरफेस हेले पूरा एनक्लोज हबो
बुझले पूरा 8टी क्यूब हेले से एनक्लोज हबो ए भले एनक्लोज हवा दरकार सरफेस को देखा जिया दरकार नहीं तले पर क्यूब केते हबो 1/8 मु सरफेस कथा पचारनी मु क्यूब कथा पचारची फर्स्ट पर क्यूब रे कला पर हमें सरफेस कथा हेबे तापर तार 1/3 बुझ पालो माने 8टा हेले तू लिखिबू क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट गोटे क्यूब रो तो जो क्यूब टी कनेक्टेड अछि कॉर्नर रे अछि तो तीनटा सरफेस सहित कनेक्ट थिबो सेही तीनटा सरफेस को छाड़ देला आउ तीनटा रहला तो जे जो पर क्यूब रे जेतिकी हबो बाकी सरफेस रे तार 1/3 क्यूब बाय 24 आ गोटे वे भाई पारिबु देख केटा सरफेस 6टा साइड रे 6 into 4 24 सरफेस हैला सेमती भाई पारिबु बुझ पालो तो एटा तुम यूजुअल क्वेश्चन ए क्यूब रो पडिबो एज कॉर्नर नहीं तो फेस नहीं तो पूरा इनसाइड रे थिबो एगुडा पड़े ए जनरल क्वेश्चन सहज क्वेश्चन क्लियर नेक्स्ट धर मु गोटे एभलिया करछि जोटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रेडियस टी 4 बुझला तो तुमको दरकार क्वेश्चन हला फ्लक्स थ्रो हेमिस्फेरिकल सरफेस तो फास्ट देखुछ पूरा जो बनई गोटे एनक्लोज सरफेस देखि बाहर कल ट्राई टू फाइंड आउट वेरी गुड
वेरी गुड किए कला सही समय समर्पिता गोटे एनक्लोज सरफेस ना ना एटा गॉस लॉ लगे दबा एठी अप्लाइंग गॉस लॉ flux through any closed surface is charge enclosed by epsilon naught ए भीतर की चार्ज हम देनी तो ये दीटी सरफेस अछि हां वेरी गुड दीटा सरफेस अछि गोटे फ्लैट सरफेस आ गोटे हेमिस्फेरिकल सरफेस मिसिकी जीरो फ्लैट सरफेस इजिली मैं कैलकुलेट कर दे पारुछि फ्लैट सरफेस रे एरिया वेक्टर तळ को आउटवर्ड दैट इज पाई आर स्क्वायर आ देखो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ एरिया वेक्टर भितरे एंगल हला 180 डिग्री तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पाई आर स्क्वायर एरिया cos 180 प्लस हम माइनस हम हाँ ठीक लिखीजो खाली ध्यान दबो से अनुसार हेमिस्फीयर इक्वल टू 0 तो थ्रू द हेमिस्फीयर द माइनस टा टिकल प्लस है e into pi r square ହେଲା तो ये टाइप रो क्वेश्चन थिला सिलेंडर रो गोटे सिलेंडर देथिला सिमेट्रिकली गोटे चार्ज एठी अछि q से कहिथिला phi not is the flux through each flat surface ये टाइप रहा एग्जैक्ट तो मन पड़े मतलब जेटा थिला तले फ्लक्स थ्रू द सिलिंड्रिकल सरफेस केते हो पछे थिला देखिए बाहर कलो सिमिलर टाइप रो क्वेश्चन जीरो कम भाई बजे भलो कर जीरो होबनी चिंता कर पूरा लेख होई भलिया एटा जे लेखा एनक्लोज है अछि तले केतेटा सरफेस पूरा लेख है जो आंसर क्यू एनक्लोज है अछि खाली सिलिंड्रिकल सरफेस लिखा अछि सिलिंड्रिकल सरफेस आउ टिके भलो चिंता कर दीटा सरफेस अछि पड़ी एटा पड़ी सारी नीट रे तो पूरा सिलिंडर रे फ्लक्स जो लिखी टोटल केते लिखी चार्ज एनक्लोज है अछि ना चार्ज नहीं कि ता भीतर हां ए बड़ा टाइप रो ताले टोटल करे दीटा सरफेस अछि दीटा फ्लैट सरफेस आ गोटे सिलिंड्रिकल सरफेस मिसी की क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हैला
इच रे फाइ नॉट तो सिलिंड्रिकल रे क्यू बाई एप्सिलॉन तो सिलिंड्रिकल सरफेस रे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 फाइ नॉट बुझेला बुझ पारल हाँ फाइ नॉट मु देइछि आ इच सरफेस रे लिखि बा इच फ्लैट सरफेस रे फाइ नॉट बोली काई सब्स्टिट्यूट कर परिबो तो क्वेश्चन गिवन फाइ नॉट मु कहछि फाइ नॉट इच फ्लैट सर कोन फाइ एडु इलेक्ट्रिक फील्ड सब बड जीवो ना एठु जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुडा बाहरिबो ए तो सब डायरेक्शन ट्रैवल करिवो ए सब डायरेक्शन जीवो एमती चलियो फ्लक्स कहले कोन कि केते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होची ता पे डॉट मैथमेटिक्स करा हिचे हम भाई एवढा जीवो सब बड जीवो से बुझला नेक्स्ट तो देखो गोटे चार्ज Q1 एट रखा हिचे एट गोटे चार्ज माइनस Q2 अछि तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर एठू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहरला एठे सरला से कहूची एठू जो बाहरला एंगलटा अल्फा एंगल रछि ताले जो एंट्री करिवो एंगलटा केते हैला तो ये क्वेश्चन को भी आमे सेही फ्लक्स हिसाब रे करले जल्दी कर परिबा तो देखो एठू जो एमती बाहर थबो एटा गोटे एंगल बोली भाबि जा ये गोटे सॉलिड एंगल एतिकी ये रे बाहर छि सेमती फील्ड हैला तो एठू जो फ्लक्स टी बाहर छि से जाके कोठी मिसछि Q2 रे एठू जो फ्लक्स टी बा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टी आसुछि से जाके कोठी सरुथबो नेगेटिव चार्ज रे कि नहीं एतिक रीजन तो एठी थिबा फ्लक्स आ एई फ्लक्स इटा को समान हो दरकार कोन भाई एठू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरियो सेठी जाके एंड हबो बुझियोची तो यार सॉलिड एंगल ये एतिकी कोनिकल एंगल रे होची एतिकी कोनिकल एंगल रे होची कन से एंगल टा हिंदी पचारिछि तो लिखिबी कोन लिखिबी एठी Q1 by 2 epsilon naught 1 minus cos alpha हाफ एंगल तो देइछि हम क्वेश्चन इज इक्वल टू लेट एंगल टा बीटा ये एंगल टी लेट बीटा बीटा टा केते हो तो Q2 by 2 epsilon naught 1 minus cos beta so from here Q1 by Q2 is 1 minus cos beta by 1 minus cos alpha चलो बीटा बीटा तुम बाहर कर परिबो नेक्स्ट मैथमेटिक्स हैला देखि बाहर कलो बीटा केमथि लिखिबा जो कर परिबो जानि मैथमेटिक्स देखो कंपनी बळे बळे एति जानि जानथि तार मैथमेटिक्स कर परिबोनी भूल हो तुमरा करे ट्राई कर 1 माइनस cos बीटा
इज इक्वल टू Q1 by Q2 1 minus cos alpha 1 minus cos बीटा को लिखि परिबी 1 minus cos 2 थीटा मने पका तो यही जीवो 2 sin square theta that means beta by 2 कि नहीं Q1 by Q2 2 sin square alpha by 2 2 get cancel है तो स्क्वायर रूट कर ले गला तो sin बीटा by 2 तो बीटा sin inverse Q1 by Q2 रो स्क्वायर रूट sin alpha by 2 बुझेला क्लियर तो मत कहब तुम क्वेश्चन किसी पचार पचार जाऊँ भल क्वेश्चन से भी रही तो এইটা जोड़ा देखुचु এটা স্ফিয়ারটা ফুটবলটা ভাবিদে কনসিডার ফুটবল আর এটা একটা রিং এটা হলা রিং এই রিং উপরে এমতি চার্জেস আছে हैला एमनकर रेडियस दी जणक रेडियस समान बोथ हैव सेम रेडियस यार भी रेडियस आर एंड लकीली तमे तो देखुछ एटा यार सेंटर बुझेला तो तू देखि पारुछु से फुटबॉल भितरे किछि पार्ट रिंग रो अछि रिंगटा फुटबॉल भितरे पसि जाइछि तो फुटबॉल किछि चार्ज को एनक्लोज करी रखिछि तो फ्लक्स थ्रू द फुटबॉल किछि डाटा दे दउ से टर्म में लिखिबो जो चार्ज गुडी को अछि प्लस रिंगटा माने लेंथ हिसाब रे अछि प्लस लैम्डा गुडी लिखि दउ यूनिफॉर्म किछि न कहि माने सदाले यूनिफॉर्म भाबो कौन सी एनक्लोज सरफेस दे जवन दिमाग रे सदा बळे फर्स्ट क्वेश्चन आसिया कथा गॉस लॉ हैला जल्दी करो आज को सरी गले सरला या को बढ़ेबा तुम खाली गोटे क्वेश्चन देबी लास्ट रे सेति आ बेसी नहीं
पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर केमती आसीबो? ए भीतर चार्ज केते एनक्लोज हिची? फुटबॉल टा तो गोटे एनक्लोज सरफेस ना, दैट मीन्स तते दरकार q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ए केते पार्ट एनक्लोज हिची? मोर को पार्ट एनक्लोज हिची फुटबॉल रो? एतिकी पार्ट। तो एई तकर जेतिकी चार्ज अछि सेटा तार आंसर हो। एतिकी भी हिंट देली, ट्राई करो। सेतक पार्ट जो तक फुटबॉल भितर अछि सेई तक चार्ज तो एनक्लोज हेके अछि ना, तो सेई तक चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। एबे जे मोटर बाहर करो केते चार्ज ता भितर अछि। फुट आहुरी भी हिंट दे दूची, फुटबॉल रो केते सॉरी रिंग रो केते पार्ट सेटा हो? जे पूरा रिंग टा कोन उठे अछि से रिंग रो केते पार्ट फुटबॉल भितर एंट्री करछि? तो टोटल चार्ज रो सेतिकी पार्ट फुटबॉल भितर अछि। लेट टोटल चार्ज टा q रिंग ऊपर, तो रिंग रो केते पोर्शन फुटबॉल भितर अछि, तो सेतिकी पोर्शन रो चार्ज भी फुटबॉल भितर थिबो। समर्पिता हाफ हबडा रिंग रो हाफ टा देखाबी तोते, बहुत सहजटा रे। देखो एइठू एइ जाय डिस्टेंस केते हबो? रेडियस आर, एटा भी तो रेडियस आर, आ एई सेंटर एटा भी तो रेडियस आर, तले एंगल केते हबो? 60 डिग्री। एपटे भी सेई कहानी, एटा भी ताले 60 डिग्री। बुझ पाला ना, बुझ पालानी? ताले तू जे देखुछु रिंग रो 120 डिग्री फुटबॉल भितर अछि। रिंग रो 120 डिग्री माने 1/3 360 टा कंप्लीट, तार 1/3 केते 120 डिग्री, 120 डिग्री ही ता भितर अछि। रिंग रो 120 डिग्री पार्ट ई पार्ट टी भितर ई फुटबॉल भितर अछि, तो 1/3 पार्ट नहीं कि? ताल टोटल चार्ज जदि ता ऊपर q बोले कहूछि, जदि तार टोटल चार्ज q, तो q by 3 पार्ट इज इनसाइड द फुटबॉल। बुझ पाला ना, बुझ पालानी? ताल टोटल चार्ज टा केते सेठी? लिनियर चार्ज टा लैम्बडा इनटू लेंथ तार, लेंथ केते 2 पाई आर। बुझ पाला ना, बुझ पालानी? एनक्लोज सरफेस माने सदाळे खोजिबो कोन? चार्ज केते एनक्लोज हे कि अछि बाय एप्सिलॉन नॉट, सरला आंसर। आ जे तुम पाखे किछि इन्फॉर्मेशन एक्जेक्टली नाही cos थीटा cos थीटा करिया पई, एतिकी ही तार पाठ। तमर सदाळे चांसेस ऑलमोस्ट 100% चांस जोडे सिमेट्री रो पडिबो, सिमेट्री रो जेई फेई रे भलो क्वेश्चन तकर अनसिमेट्रिकल टिके रखा हिथिबो, अलगा किछि जे मोटरी रखा हिथिबो जेमति कैलकुलेशन करि होतो। आ गोटे क्वेश्चन पचरुछि, बुझ पाला रे? बुझेलाडा दुई जणा को? नेक्स्ट से भलिया नेक्स्ट क्वेश्चन, गोटे स्फीयर, सर्कल नुहे गोटे स्फीयर, या भितरे लैम्बडा
गोटे लिनियर चार्ज जाइछि यार रेडियस r यार रेडियस हला r आ एठो तक डिस्टेंस हला x हला तो फ्लक्स थ्रू द स्फीयर flux through the sphere 4 pi r square कोन पाई मु करछु सदारण बुझ पानी अरे q enclosed by epsilon naught सला गोटे तारडे पसिक जाई फुटबॉल भितरे तारर लेंथ दैट मींस इतिकी लेंथ रे केते चार्ज अछि सेटा 4 pi r square कोड आसीबो डायमेंशनल ठीक हो सेटा q enclosed by epsilon naught मोर आंसर्स ओते बस एतिकी लेंथ भितरे केते चार्ज एतिकी लेंथ रे एठु एतिकी लेंथ भितरे केते चार्ज अछि लेक्चर मोर सरला काम 2 pi r एटा कोन 2 pi r लेंथ हबो कोन डायमीटर पाई फुनी कोड अछि अरे इतक लेंथ लिखबार अछि एठु इतक लेंथ वेरी सिंपल एटा r रेडियस एटा x तले एटा कत हो लेंथ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रो स्क्वायर रूट सिमिलरली एतक भी सेति लेंथ एटा r तर रेडियस एटा x r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिनियर चार्ज लेंथ से तो मल्टीप्लाई होबो तो लैम्डा into 2 r square minus x square रो स्क्वायर रूट by epsilon naught सरला एते कोन अछि चार्ज केते एनक्लोज हिची देखियार अछि बस तमे स्फीयर रो एरिया कथा काई भाबुचो एटा तो एरिया फेरियर की संपर्क नै हमरो एटा तारडा जैछि लैम्डा लेखाइ बना ओयाटा ना गोटे फुटबॉल भितरे तारटे गोटे रड भरी कर देबी रड रो केते पार्ट ता भितरे अछि एति तो लिखियार अछि तो तुम पाई एटा क्वेश्चन हला एटा स्फीयर बर्तमान तारटे एटे रड थिला कहार सरफेस एरिया करिवो ई इनटू सरफेस एरिया तू जो करिवो कहार सरफेस एरिया करिवो एटा कोन चार्ज टा पॉइंट चार्ज की जे सेंटर रे अछि कर दबो एठु जो इलेक्ट्रिक फील्ड उडा बा तार रो बाहरिवो एठु जो इलेक्ट्रिक फील्ड रो तार रो बाहर केमति बाहरिवो एठु इलेक्ट्रिक फील्ड रो तो एमिति सो बाहर थिवो तो एटा केमति कैलकुलेट कर दबो सब जगह तो ई आ ए रो अलगा आंसर हो ए जगह रे ई रो वैल्यू अलगा थिवो ए जगह रे ई रो वैल्यू अलगा थिवो ए जगह रे ई रो वैल्यू अलगा थिवो ए जगह रे ई रो वैल्यू अलगा ए जगह रे ई रो वैल्यू अलगा ए जगह रे ई रो वैल्यू अलगा एरिया वेक्टर भी सबुठी जो थिवो तार एंगल गुडा सब अलगा अलगा हेतिवो केमति तू बाहर करिवो तू जदि आंसर को एठु बाहर करि परिबो सब एंगल बाहर करि बढ़िया कथा बाहर करि त केति बाहर आंसर एपटे पुनी मु तो एति पचाछि पुनी एपटे अछि या लागि एठी इलेक्ट्रिक फील्ड अलगा हेतिवो या लागि एठी इलेक्ट्रिक फील्ड अलगा हेतिवो एटा केमति ओशियन सरफेस टू ड्रॉ करिवो कर दे परिवो e into pi r square बुझ पालो ना पालोनी तो सिंपल एनक्लोज टू चार्ज आगो देखो मुंडर पोसाओ जदी कोनसी एनक्लोज सरफेस ता भीतर केते चार्ज एनक्लोज होई गछि तो सीधा लेखो आंसर सेटा किछ दरकार नै जदी एनक्लोज न पाउछो बा हिंदी किछ नाही बा गोटे पचार थांती पर्टिकुलर एरिया रे केते जाईची फ्लक्स
ताहले तुम पाई मुश्किल हेतांत पूरा टोटल इनक्लोज सरफेस रे पचारि दियो काहे एते टेंशन बुझिला तो ये सरफेस थ्रू दे की बर्तमान एटे देखो रड जाइथिला मु गोटे मेटल शीट टे गोटे सॉरी गोटे चार्ज शीट पूरा भीतर एंट्री कर देली गोटे शीट बुझ पारछ तो गोटे पेपर माने गोटे प्लेन पेपर टे भाबी दे फुटबॉल भीतर एंट्री कर देछि एटा पेपर टा एटा पूरा एमदी पेपर टा हैला लार्ज शीट एटा गोटे या परे सिग्मा अछि चार्ज से समान जिंस या सेंटर रु एई तक डिस्टेंस हैला r सॉरी x और रेडियस यार r रेडियस तार r फ्लक्स केता हो सही क्वेश्चन फोन फ्लक्स थ्रू द स्फीयर एटा तमे निजे करिवो तम पय होमवर्क भाबिबो सीट टा थिले सीट रो केते चार्ज स्फीयर भीतर अछि बुझला एटा तम पय काम नेक्स्ट देख लिनियर चार्ज अछि एटा हैला हैला एटा गोटे मु गोटे लार्ज प्लेट रखी बुझुछ एटा धर तोर एक्सिस कर दोछि बुझ परिबो माने गोटे प्लेट ऊपर एटा रखाई छै एटा गोटे प्लेट ऊपर रखाई छै तारटा एटा से एक्स एक्सिस एटा तोर वाई एक्सिस एटा वाई एक्सिस को पैरेलल अछि लाइन टा एटा अलग कलर कर दो सब बुझ पारे इधर प्लस लैम्डा अछि हला इनफाइनाइट पूरा हला एठे एटा गोटे सरफेस देछि मु एको शेडिंग कर दोछि हला जानि परलो रेला सरफेस एटा गोटे डिस्टेंस दे देछि क्वेश्चन रे डिस्टेंस इज गिवन
एठू डिस्टेंस टा √3/2 the flux through this surface पूरा सिमेट्रिकली भी अच्छी ओरिजिन रे अच्छी तार ये शेडेड सरफेस जो अच्छी ये प्लेन रे केते फ्लक्स हो क्वेश्चन फ्लक्स थ्रू द शेडेड सरफेस गोटे ही सरफेस अच्छी यार लेंथ फेंथ किसी देइछि लिखि दउछि ए लेंथ हला l एटा हला l एटा हला √3 ए बोल लिखि दउछि बेटर हो एटा √3 ए हले एटा को ए लिखि दउछि देखो एठी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो तुम मुंडरे आसो सर मु एठु एमती एंगल कर देबी एटा पॉइंट चार्ज नुहे लिनियर चार्ज तो लिनियर चार्ज लगी इलेक्ट्रिक फील्ड गुडा ताठू ए जो प्लेन टा गुडा कांस्टेंट डिस्टेंस रे अछि तो जदी इलेक्ट्रिक एटा धर लाइन टा एटा धर प्लेन चार्ज टा बुझो छी नै एठा अछि प्लेन टा रखा हिच सीट टा या पा इलेक्ट्रिक फील्ड गुडा सब तो एमती थिबे किछ असुविधा नै कि नहीं कोठी एमती थिबे ए जो y एक्सिस रे थिबे किंतु सीट टा तो एमती लंबा ही अछि ना सॉरी सीट टा तो एमती अछि ताको जोडा सीधा सीधा थिबो एमती थिबो जोडा तेढा थिबे एमती थिबे एठी धर एमती पडुथो बुझ पारछो नहीं धर एटा एबे सीट टा केंति बनले बुझी हबो ता 3 डायमेंशनल टा तो ताको बुझिया पई मु ट्राई करूची देखो नेचर गुडा स्टडी कला पर तुम जाई करि परियो धर एटा लैम्डा एटा प्लस लैम्डा मान तो स्क्रीन रू बाहर को बाहरी हैला अब एटा तोर सीट टा बुझ पालो नहीं तो 8 डिस्टेंस टा हला √3/2 ना कोन उडे देछि ए जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक अछि तू लिखि देलु किंतु ए जगह इलेक्ट्रिक फील्ड याडे थिबो ए जगह इलेक्ट्रिक फील्ड याडे थिबो बुझ पारछु ना नहीं तो चारिपटे ए लैम्डा रो चारिपटे इन गोटे सिलिंड्रिकली पूरा थिबो ना नहीं नहीं स्क्वायर पिरामिड बने दरकार नहीं जदि पॉइंट चार्ज ही थांदा तो स्क्वायर पिरामिड बनथिलु बने के भाबि थांदु एटा पुरा पूरा इनफाइनाइट चार्ज अछि तमे कोन भाबिबो गुटे जस्ट भाबि नियो गुटे एनक्लोज सरफेस एबला बनै नियो पूरा मु देख किने बनौछि तब सेटिंग करले बुझि जिवो एटा बढ़िया हबो कोन मु ए भला गुटे पूरा सरफेस बनै दोछि हला एबे पूरा सरफेस टा बनै दोछि तारटा मु भाबि दोछि मझिरे जाइछि कोन सिमेट जदि किछि देखु जल इनफाइनाइट देइछि तबे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट गुटे करि परिबो किछ असुविधा नै हला तो ये जो वायर टा तुमर जाइछि जो वायर टी जाइछि ता मझिरे जाइछि भाबि दे ता मझिरे एमती जाइछि एंट्री हे के जस्ट थिंक एमती मझा मझी एंट्री करछि एठुमती रहिछि बुझिला इनफाइनाइट से तार इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन पाई हम आराम रे सब जिंस अरेंज करि परिबा सिमेट्रिक अरेंजमेंट करि परिबा
देखे जो दुटा सरफेस को एंट्री कर तो किसी हबार नहीं तो ये पूरा क्यूब भितर मुझे कहबी सिमेट्रिकल रखाई सिमेट्रिकल माने कोन देख क्वेश्चन एक्चुअली कोडे पचारिछि तळ सरफेस रो क्वेश्चन पचारिछि तळ सरफेस रो एटा हला तो एई सरफेस पे क्वेश्चन पचाराइछि बुझ पारछ नहीं तो ये ज्योमेट्री गुडा केमति केमति बना होछि ताको टिके देखो इनफानाइट जदि किछि अछि ताले एटा किछि गुडा हम सिमेट्री पाइबा उफ लाइन पळला रे हेलो